तिमाही में सोने की मांग बढ़ गई है। घरेलू बाजार में इस दौरान 10% बढ़कर 148 टन के पार ये चली गई है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिपोर्ट निकाली उसके मुताबिक अगस्त में दाम गिरने की वजह से मांग बढ़ी है और ऐसे में कुल ग्लोबल डिमांड तकरीबन 1% के आसपास बढ़ती नजर आई है। वहीं इसी दौरान घरेलू इन्वेस्टमेंट डिमांड पर नजर डालें तो यहाँ पर तकरीबन 11% की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन जब ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड को धक्का लगा है। 21% की भारी भरकम गिरावट वहां दर्ज की गई है। लेकिन अब यहाँ से आगे डिमांड का आउटलुक कैसा है, क्योंकि दिवाली वाले क्वार्टर में हम खड़े हैं, शादियों के सीजन की डिमांड निकल कर आती है और ओवरऑल ये साल किस नंबर पे खत्म होने को, क्योंकि भाव अब 32,000 के करीब है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के एमडी सोमासुंदरम पीआर। मिस्टर सोमासुंदरम, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, अब बस दिवाली सामने खड़ी है, इस बार दिवाली से क्या उम्मीदें हैं, डिमांड कैसी दिखाई दे रही है? Following the September quarter GDT which we released last week, you might have seen there was a jump of 10%, but it was on a low base. The trade feels that the consumer sentiment hasn't improved. It's partially because of the price levels that are prevailing at the moment. They're not really something which is good for an entry. And partially there are other reasons, like there is really no trigger for gold demand. The inflation is still low. And so they feel that this Diwali is not as what I would say sizzling as it used to be in the past. Okay. वैसे हम इस फैक्टर को भी नकार नहीं सकते कि इस बार देश के 5 बड़े राज्यों ने सूखा डिक्लेयर किया है। ज़्यादातर इलाकों में ड्रॉट वाली सिचुएशन है। महाराष्ट्र, गुजरात और इसको लेके जो दक्षिण भारत के भी राज्य हैं वो भी इस बार इफेक्टेड हैं। इसके मद्देनजर डिमांड का क्या अनुमान है, गिवन द फैक्ट कि 65 से 70% जो डिमांड निकल कर आती है वो ग्रामीण इलाकों से आती है? Yes, we have heard that aggregate figures that 8% below the long-term average, that's the monsoons, and as you rightly said, 5 states have reported a drought in certain districts. We have seen that over a period of time, yes, monsoons do have a significant part in demand, but they are not as significant as the other factors. Yes, they will have some impact in the places, including, as you have seen, not just the drought, even the floods in Kerala, but they are not as significant a factor these days as it used to be in the past. But having said that, I think in the very short run, there will be this will play on the sentiments of people, and it will reduce spending, and certainly gold will be affected. अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बता दीजिए कि अगर आपको दिवाली के आसपास और आगे जाते हुए इस वजह से लग रहा है कि डिमांड इफेक्ट होगी, तो ये पूरा साल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? डिमांड जैसे कि हमने पहले आपसे बात की थी 750 टन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब डिमांड की रेंज पूरे साल के लिए क्या दिख रही है? See, if you take 3 quarters, we have seen something close to 524 tons. Okay, last year it was 530 tons in the 3 quarters. Okay, that is what the figures stand as of now. Now it all depends on how the 4th quarter will play out, and 4th quarter, as you know, is always the best quarter for India. But this time, because of the high prices and inflation also being very well controlled, there is no trigger for gold demand. So we still have to wait and see how Diwali and the wedding season pans out. Our expectation is that it will be 700 to 800 tons. We retain that estimate. It will be more at the lower end of the range. ओके, क्योंकि आपने मेंशन किया कि कीमतें इस बार ज़्यादा हैं और क्लियरली अभी हम जैसे वायदा में 32,000 के करीब देख रहे हैं, और अगर कोई फिजिकल में ज्वेलरी खरीदने जाए तो 33,000 के आसपास भी मिल रही है। ये फैक्टर काफ़ी साइकोलॉजिकली बायर्स को भारत में इम्पैक्ट करता है। इसका आगे आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं डिमांड वाइज? Yeah, I mean, it is, you see, in the short run, price is a very big factor. Certainly, whereas in the long run, if you had seen our study, we had done a study about last 25 years data, income is the biggest driver of demand. It's not price, it's not other factors. Okay, and income is growing in India. But in the short run, certainly this price has spiked. Currently if you look at it, it is going around 33,000.
And that's a very stiff thing. That's also the reason why we find, in spite of stock market volatility, people have not moved significantly to gold. Normally, when stock market volatility is high, you'll see the urban demand moving to gold. But this time it hasn't happened. Yes, a little bit of coin purchase was done when prices are low, but people haven't moved big time into gold because the entry point at price now is very stiff. So we do expect this will have an impact in this quarter. ओके मिस्टर सोमसुंदरम पीआर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा एनालिसिस एक्सपेक्टेशन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।